Hello and welcome to one more live stream. Okay, it's already very late today. So today's topic is factorization of algebraic expressions expressible as a perfect square. Okay, so this is our fourth live stream on factorization. The previous three topics have already been uploaded as videos, so you may check them as reference. So today we are going to discuss one more form of factorization which is expressible as a perfect square. Excuse me. So we are familiar with these identities, right? A plus b whole square equals a square plus 2ab plus b square, and a minus b whole square equals to a square minus 2ab plus b square. So sometimes what happens, before I move into the factorization part, sometimes students they tend to forget this factorization, this identity. So what we can do in that case, suppose I am not able to remember, so what we can do, a plus b whole square, I can express it as a plus b into a plus b. Okay, then we will multiply a and a plus b and b with a plus b. Okay, so this is a square plus ab plus ab plus b square. Okay, so ab and ab, it becomes twice ab. So this is our identity. I am teaching this in case you forget, you can try this. Okay, so let's try with some factorization. Again, I am just showing the book. I cannot, my setup doesn't allow me to put both my notebook and book. So this is the book I am using for reference. Okay, I'll write down the questions. Let's see how many questions can we solve today. Okay, I can see some comments. Let me read. Gopi Gopika. Hi Anna. Hello. Hello Gopi Gopika. Hello Ayush. Thanks for joining. May I know where are you from? And I also request you to please like my stream. Okay, it takes lots of effort to bring this to you. Okay, I'm writing my first question. 4x square plus 12xy plus 9y square. आयुष जी आप बिहार से हैं, बहुत बढ़िया. और क्या करते हैं आप आयुष जी? Okay, so the expression is 4x square plus 12xy plus 9y square. I always suggest my students to just ignore the middle term for some time. Okay, now 4x square, 4 is a square of 2, 2 whole square is 4, and 3 whole square is 9. Okay, ओके आयुष जी, अभी 9th में हूँ, अगले महीने
10th में जाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो अभी फाइनल एग्जाम्स हो गए होंगे शायद आपके, बहुत सारे बोर्ड्स के हो भी गए हैं एग्ज़ाम। बहुत सारे स्कूल्स का क्लास 10 का क्लास स्टार्ट भी हो चुका है अभी, जहाँ तक मुझे पता है। चलिए कोई बात नहीं। और प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आपका एग्ज़ाम का? ओके, सो 4x²। तो मैं बात भी कर रहा हूँ, बीच बीच में क्वेश्चंस भी समझा रहा हूँ। ओके, सो डोंट माइंड। So 2x², so 2x, sorry, 4x² can be expressed as 2x whole square, okay, and 9y² can be expressed as 3y whole square. Okay, now our identity says a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे हम लोग 2 लगाएंगे, और जो पहला ब्रैकेट है उसमें है 2x, दूसरा ब्रैकेट है 3y. So this is just in the form of 2ab. So you can cross check also. 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, x into y is xy. SAS, अच्छा परसों है मैथ्स, अरे वाह बहुत बढ़िया। परसों है मैथ्स का एग्ज़ाम, फिर होली के बाद है। अच्छा, SAS बता सकते हो? जी बता तो ज़रूर सकते हैं, पर आज का लाइव स्ट्रीम मैंने फैक्टराइजेशन के लिए रखा है, तो किसी और दिन बताएंगे। So 2x whole square plus 2 into 2x plus 3y plus 3y whole square. So this will become 2x plus 3y whole square. So this is 2x plus 3y and 2x plus 3y. Nitin Verma, 2 into 2 into 3, correct. आयुष भाई नाराज हो गए आप? चलिए अभी आप बढ़िया से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। अभी के लिए बाय, फिर आइएगा किसी दिन लाइव स्ट्रीम में। ओके, सो लेट अस ट्राई वन मोर क्वेश्चन। There are 27 questions in this exercise. Let's see how many can we solve today. So next question is 9a² minus 24ab plus 16b². Okay. नाइस टू मीट यू आयुष भाई, और एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा चैनल के बारे में। नितिन वर्मा 10th 12th की या आगे भी? नितिन वर्मा, आप किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं नितिन जी? 10 12 की या आगे भी? 2 into 3 into, ओह चलिए आप आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 into 3 into 4, ठीक है, मैं दूसरों को भी थोड़ा समझा देता हूँ। ओके, सो वी हैव 9a², 9 is a whole square of 3, 16 is a square of 4, right? 4 square equal to 16. So first we will express these two. Okay, so 9a² is 3a whole square. We'll put a gap, like I said, we'll ignore the middle term for some time, and this is 4b whole square. Okay, and then minus 2 3a and 4b. Again you can cross check. 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24. I mean, this is not the, I'm not saying that this is the right way to do, but initially, I mean, this is the best approach to do, right? Otherwise you may get confused. Once you get used to with this factorization, एकदम धड़ाधड़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? So this is 3a minus 4b whole square
जी नितिन, एक्चुअली चैनल भी अभी बहुत नया है, तो 10th की और 12th की शायद ये इस साल अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो भी गए हैं, तो देखते हैं अप्रैल महीने से कराने का प्लान तो है। आप लोग जुड़े रहेंगे तो मैं ज़रूर कराऊंगा। सो आवर आंसर इज 3a minus 4b, 3a minus 4b. Okay. Okay, question number 3. p square q square minus 6pqr plus 9r square. आप क्या कर रहे हैं स्टडी में? मैं क्या कर रहा हूँ? फिलहाल तो मैं फैक्टराइजेशन लेके बैठा हूँ अभी। ये ऐसे तो क्लास 8 का टॉपिक है, बट ये 9th और 10th में भी कभी कभी काम आ जाता है। तो बच्चे एक्चुअली भूल भी जाते हैं 9 10 पहुँचते पहुँचते, तो थोड़ा ये 8 के बच्चों के लिए भी है। श्लोक, श्लोक 9066। हेलो श्लोक, कैसे हैं आप लोग स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें भी बहुत एनकरेजमेंट मिलती है ना। बहुत बढ़िया श्लोक, आप कहाँ से हैं श्लोक? मैं हाई फाइव यहाँ से ही दिखा देता हूँ, हाय। थैंक यू नितिन। अरे अरे, अयोध्या से, जय श्री राम श्लोक जी। ठीक है, तो ये सॉल्व करते हैं थोड़ा। सो वी हैव p square q square. Now p square q square is very easy. We will write this as pq whole square. Okay, and then thoda gap, and then 9 is 3r whole square. नितिन वर्मा, आप कहाँ से हैं? जी मैं हूँ असम से। असम में एक छोटा सा शहर है डिब्रूगढ़। सो मैं डिब्रूगढ़ असम से हूँ। -2 pq or 3r multiply. So we can again cross check. 2 into 3 is 6. We have 6, and p into q into r, pqr. So this is our broken down form of the expression. Then we will write pq minus 3r whole square, and final answer is pq minus 3r, pq minus 3r. ज़रूर आएंगे श्लोक जी, क्यों नहीं आएंगे, आने का तो बहुत मन है। आप घुमाइएगा अयोध्या, तब तो ज़रूर आएंगे। Okay, now I am turning the page for some new question. Okay, let me adjust the copy. मेरा सेटअप बहुत छोटा है, इसीलिए बार बार ये एडजस्ट करते रहना पड़ता है। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्यों? शायद रश भी बढ़ गया होगा शायद, इसीलिए पिलग्रिमेज तो पहले से बढ़ गया होगा। अरे आजकल सब जगह इतने एक्सीडेंट्स होने लगे हैं, क्या बताएं।
और फेसबुक फीड्स में तो एक्सीडेंट्स का वीडियो देख देख के मतलब क्या ही कहें। जी जी जी, ट्रैफिक का बहुत और मिसमैनेजमेंट बहुत होता है। ट्रैफिक ट्रैफिक तो हर जगह होता है, बस आई गेस मिसमैनेजमेंट की वजह से। आज तो अभी कितने व्यूवर्स हैं? आई हैव 3 व्यूवर्स। आई स्टिल रिमेम्बर पहला लाइव स्ट्रीम अकेले कर दिया, एक भी व्यूज़ नहीं था, फिर भी अच्छा लगता है करके, और मैथ्स करके तो और भी अच्छा लगता है। तो वी हैव 36a² प्लस 36a+9। ओके, तो 36 इज द होल स्क्वायर ऑफ 6। बहुत अच्छा लग रहा है नितिन जी, आप साथ साथ में कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सो दिस इज 6a होल स्क्वायर plus 3 whole square. Okay, and then we have 2 into 6a into 3. Okay, 2 into 6 is 12, 12 into 3 is 36. Just follow the process. Okay, and ये बहुत easy factorization है। Okay, इनफैक्ट सारे factorization ही बहुत easy होते हैं। So 6a plus 3 और 6a plus 3। प्लीज़ एक ग्रुप बना लीजिए सर। अच्छा, क्या आप गाइड कर सकते हैं कैसा ग्रुप बनाना है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप? ये मैं अभी बिल्कुल, मैं भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हूँ। मैं भी आज ये सोचता हूँ ये करूँगा, फिर कल और कुछ दूसरा प्लान करता हूँ, तो मैं भी फाइनलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। आप बताइए कैसा ग्रुप बनाने से ठीक रहेगा? आप लोग का भी सजेशन बहुत ज़रूरी होता है ना। अच्छा श्लोक जी, आप एक बात बताइए, अगर मैं लाइव स्ट्रीम रखता हूँ तो कौन सा टाइम बेटर रहता है? इवनिंग का टाइम या रात का टाइम या दिन में करने से अच्छा रहता है? जस्ट एक सजेशन चाहिए आपसे। Okay, moving on to the next question. We have a square plus 2ab plus b square minus 16. Okay, so we have 4 terms unlike the previous questions. But we can see the first 3 terms, a square plus 2ab plus b square. अच्छा, आप आईआईटी बॉम्बे से हैं? अच्छा, बढ़िया। आपका चैनल आ गया, चलिए बहुत अच्छा है। कभी कभी ऐसे भी मज़ा आता है ना करके, जब हम लोग बड़े हो जाते, अभी लगता है कि ये सब इतने इजी क्वेश्चन है, जब स्कूल में थे तब कितना हार्ड लगता था ना। मैं भी करता हूँ कभी कभी ऐसे, मैं भी दूसरों के स्ट्रीम में जाके बैठ जाता हूँ फ्री टाइम मिलने से। नहीं, फिर भी अपना टाइम निकाला और बैठ गया, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। नितिन जी, अब आई एक लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ज्वाइन हुए, वरना मैं भी अकेले बैठ बैठ के ही कितना सम्स कर लेता है ना। अभी बातचीत भी कर रहा हूँ आप लोगों से, सम्स भी कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ओके, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन जाएगा, दिस विल बिकम a प्लस b होल स्क्वायर। ओके, एंड 16 is 4 square. Okay, now although we are using a plus b whole square identity, at this point we are going to use a square minus b square. Okay, so this is a plus b into a minus b.
So this will be a plus b plus 4, and this is a plus b minus 4. Okay, so this will be our final answer. सर आप क्या कर रहे हो? फिलहाल तो मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ. एक मिनट, मेरा कॉपी में थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ. ओके फाइन, सही है. धीरे धीरे आप ऐसे ही कीजिए, भगवान आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे. थैंक यू सो मच नितिन, आपके विशेष के लिए. जी जी, कोशिश तो हमेशा चलती ही रहती है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है. ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं राइट? ओके. तो कौन से स्ट्रीम से हैं आप? कौन से स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे हैं? CS. ओके, कंप्यूटर साइंस. मैं जब कॉलेज में था मुझे एक ही CS पता था बस, काउंटर स्ट्राइक, जो खेल खेल के बहुत टाइम वेस्ट किया. Okay, so we have 9z square minus x square plus 4xy minus 4y square. So in this question, just like the previous one, we can write 9z square as 3z whole square. Or let it be, we will write it in the next step. First, we will do one thing. We will take minus, we will take -1 as a common factor, but we don't write the 1. Okay, हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, so we'll write minus. So this minus x square will become plus x square. This becomes minus 4xy, and this becomes plus 4y square. मैं कितने साल का हूँ? मैं अभी कितने साल का हूँ? एक गेस कीजिए आप, मेरी आवाज़ सुन के कैसा लगता है मैं कितने साल का हूँ. तब तक मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ. So 9z square is 3z whole square. Okay, minus, now we'll use the second bracket or the curly bracket. Okay, x whole square, and then 4y square is 2y whole square. Okay, and minus 2x 2y. Okay, so we can cross check again. 2 into 2 is 4, x into y is xy. Okay, আরে মাসুদ ইরফান, কি খবৰ? বঢ়িয়া. তোমাৰ কেনেকুৱা? মই ভালে আছো মাসুদ. ক'ৰ পৰা চাই আছা এতিয়া তুমি লাইভ ষ্ট্ৰীমটো? श्लोक, मैं 35 प्लस हूँ. 25 प्लस तो आप हैं ना? So this is 3z whole square minus x minus 2y whole square. So our final answer is, again we'll use this identity, a square minus b square equals to a plus b into a minus b.
আৰু মাছুদ, এতিয়া তুমি ক'ত আছা বৰ্তমান? ঘৰৰ পৰাই চাই আছা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এতিয়া পৰীক্ষাটো এতিয়া তুমি কোন চেমিষ্টাৰত আছা? তেতিয়া তোমাৰ ফাইনেল চেমিষ্টাৰ মান হ'ব চাগে নেকি, নে গ্ৰেজুৱেশ্যন হৈ গ'ল তোমাৰ? অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এতিয়া নেক্সট কি কৰিছা প্লেন? মানে মাষ্টাৰ্ছ কৰিবা নে চাকৰি তাকৰি কিবা হেৰি কৰি আছা, প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা? श्लोक भाई, मेरा एक स्टूडेंट भी आ गया है ऑनलाइन, तो उससे मैं एसएमएस में बात कर रहा हूँ, ठीक है? আচ্ছা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এনেই ভাবিলোঁ আজি এই চেনেলটো আছে যেতিয়া অলপ এনেই লাইভ ষ্ট্ৰীম কৰি চাওঁ বুলি, আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াতে আহি গৈছোঁ। বাকী ঘৰত ভাল ন তোমাৰ? आपकी तब तो शादी हो गई होगी, नहीं हुई है श्लोक भाई, अभी तक बैचलर हूँ। और कुछ जानना है मेरे बारे में? হয় নেকি? দিয়া, মোৰো ভাল লাগিলে তোমাক এনেকৈ যে লগ পালোঁ, এনেকৈ লগ পাম বুলিতো কেতিয়াও ভবা নাই আৰু। একদম বঢ়িয়া, ঘৰত চবৰে ভাল।
Okay, moving on to the next question. 9a to the power 4 minus 24a square b square plus 16b to the power 4 and minus 256. Okay, so we are going to use the same pattern like question number 5 and question number 6. Okay, so 9 3a square whole square. Okay, so why I am writing square whole square of square? We have an identity. I will not say identity, this is law of indices. So if we have a to the power m whole to the power n, this is expressed as a to the power mn, right? So I am doing just the reverse of it. So we have 4, so I am writing it as 2 multiplied by 2. Okay, let me put a gap here. 16 is 4, and same way we will write b square whole square. Okay, so we'll put this inside the second bracket or the curly bracket, minus 2 into 3a square 4b square. So we have 2 into 3a square into 4b square. We can cross check. 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24, a square and b square, right? And 256. If you have watched my previous live streams, I had suggested to learn the squares of numbers from 1 to 30. Okay, so that will be very beneficial. It saves a lot of time. So 256 is the square of 16. So we'll write 16 square. Okay, so this is 3a square minus 4b square whole square minus 16 square. Okay, so this will be, again we'll use this identity, a square minus b square equals to a plus b into a minus b. Okay, so we'll have 3a square minus 4b square plus 16 3a square minus 4b square minus 16. Okay, so I'm moving to the next page for the next question. Let me adjust. So we have 16 minus a to the power 6 plus 4a cube b cube minus 4b whole to the power 6. So 16 is 4 whole square. Okay, minus, we'll put a bracket. I'm writing the minus and putting a bracket. This means that I am taking out minus 1, negative 1 as a common factor. Okay, now how can we write a to the power 6 in the form of a square? What we can do, we can write a cube and whole square. Okay, so 2 into 3 is 6. Okay, a cube whole square, then plus 4 is the whole square of 2, 2b in the same way, 2b cube and whole square, and so this is minus 2a cube
2b cube. Let's cross check. 2 into 2 is 4, a cube into b cube. Okay, so this is correct. So we can write as a square, that means 4 square minus, okay, I forgot to put the bracket. So this is a cube minus b cube whole square. So we'll use, I'm writing the identity a square minus b square equals to a plus b into a minus b. Okay, so we can write, now I will use a bracket just for a caution, because most students they will make mistake at this point. Okay, a plus b, so I will write a plus b and a minus. Okay, sorry, I will use this bracket. Okay, now I am opening up the brackets. When we have a positive sign, we don't have to worry about anything, right? We can just open up the bracket as it is. But when there is a negative sign, students often they make mistake here, right? So we can avoid that mistake by putting a bracket. I mean, just write one more step. Okay, and this is minus a cube and plus b cube. So this will be our final answer. Okay, Ronak Kumar, hey, can you teach me triangle RHS test? I can definitely teach you, but I have dedicated today's live stream for teaching factorization. So I will definitely keep in mind. If possible, I will try and upload a video. Okay, so next question is a to the power 4 plus 3a square plus 4. No, so a to the power 4 is a square whole square, 4 is 2 whole square. Okay, now if we write 2 into a square into 2, like I always say, we have to cross check this, right? So 2 into 2 is 4, but we have 3. Okay, so this is, I mean, like all the previous 8 questions we have done, this step used to match, right? यहाँ पे जो मिलता था, we used to get the same number. But here, now what we have to do? See, so 2a square into a. 2 into a square into a is 4a square. But what we need is a 3a square, positive 3a square. So just to balance this out, we will write a minus a square. Now we'll get 3a square. Okay, 2 into 2 is 4, 4a square minus a square is 3 square. Okay, so questions can sometimes get tricky. So we'll write, so this is what, a square plus 2 whole square minus a
whole square, and then we can use the identity a plus b into a minus b. A square minus b square equals to a plus b into a minus b. Okay, so we'll have a square plus 2 plus a and a square plus 2 minus a. So this is our answer. Let's try one more. 4x to the power 4 plus 1. Okay, so 4x to the power 4. So this is 2x whole square. Okay, and 1 is 1 whole square. Now, if we write it in the form of 2ab, that is 2 into 2x into 1. So 2 into 2x is what? 4x, but we don't have anything, right? Okay, just I have made a small mistake here. So this is 2x square whole square. I'm extremely sorry. 2x square whole square. So this will be 2x square. Okay, so we have 2 into, rather we will have 2 into 2, 4x square, but we don't have that term here, right? So if we don't have a term, we have to balance it out. Okay, so we will write minus 4x square. Now this is balanced. 2 into 2 is 4, 4x square, and minus 4x square gets cancelled out. Okay, so this is 2x square plus 1 whole square and minus 2x whole square. So this will be 2x square plus 1 plus 2x, using this identity a square minus b square into is equal to a plus b into a minus b, and 2x square plus 1 minus 2x. So this is going to be our final answer. Okay, so we have 25 minus p square minus q square minus 2pq. Okay, so 25 is what? 25 is 5 whole square. So all these three terms are negative. So what we can do, we can take the negative as a common, I mean negative 1, but we don't write the 1 here. So this will be p square. We'll write the 2pq in the middle just to, make sure that this lies in the form of the identity, and then plus q square. So this will be p plus q whole square. So our answer will be 5 plus p plus q
and 5. Now if I write, I will show this step. So this step actually is 5 minus p plus q, and p plus q is within the bracket. So when we break, so this will be minus p and minus q. So this is going to be our answer. I am just skipping one step. Okay, so this is going to be our answer. So meanwhile, may I request all the viewers to please like the video. One like will be very much appreciated. Okay, so the next question is x square minus y square plus 6y minus 9. So this is again one of the easier questions, I would say. X square, so I will write it as x whole square. Okay, then I will take minus from all the three terms as common. So this will be y whole square minus 2 into y into 3 plus 3 square. Okay, so this is x whole square minus, so this will be y minus 3 whole square. So finally we'll have, let me do one thing, just write the steps, I mean step by step. Okay, so this is x minus y minus 3. So our final answer will be x plus y minus 3 and x minus y plus 3. Okay, so this is going to be our final answer. So let me check the time. Oh, it's already 12. So let's do few more questions and then we'll wrap up today's live stream. Okay, so in this question, I hope my handwriting is readable. So we have three square terms. We have a square, b square and c square. Okay, but we will take a square and b square. Why? The reason is we have 4ab. Okay, so these three terms can be grouped as one. Okay, and 4c square will be separated as the other square term. So we have a square is a whole square, then this is 2b whole square, and this is minus 2 into a into 2b. So cross check, 2 into 2 is 4, a into b, sorry, 2 into 2 is 4 and a into b is ab. Okay, and 2c whole square. So this is a minus 2b whole
whole square minus 2c whole square, and our final answer will be a minus 2b plus 2c, a minus 2b minus 2c. Okay, so please like the stream, okay, so that the stream gets suggested to more and more viewers. Let's try one more, or let's say try two more questions, then I will wrap up today's stream. Let me write. Okay, this one is unique. Okay, x plus 2 whole square minus 6 into x plus 2 plus 9. Okay, so in case you get confused, what you can do, you can take the help of another variable. Okay, so we'll assume let y equals to x plus 2. So what we'll do, we will replace the x by 2, replace the x plus 2 by a y. Okay, then it becomes easy. So we'll write y whole square minus 6y plus 9. Okay, so y whole square is y square is y whole square, I'm sorry, 9 is 3 whole square, and this is 2 into y into 3. 2 into 3 is 6y. So everything is checked. So our answer will be y minus 3 whole square and y minus 3 into y minus 3. Now the thing is, in the question we don't have the y, we have x plus 2. So what we'll do, we'll replace the y with the x plus 2. Okay, so our final answer will be, this is also not the final answer. Okay, I'm sorry, it's just I'm talking continuously for 1 hour. So this is x plus 2 minus 3 and x plus 2 minus 3. So our answer will be x minus 1 and x minus 1. Okay, so let me try one more question and then we'll wrap up our live stream today. Let me adjust the copy. Okay, now it is visible, I guess. Okay, so just ignore the questions above. So these were the questions from the previous live stream. Okay, I just lost the track. Just let me check the question number. Okay, so this will be question number 15. So a square minus 8ab plus 16b square minus 25c square. So again we have three square terms.
no? A square, B square and C square. But we'll choose these three as a group because we have AB. So AB can be obtained only if we take A square and B square. Okay. So we'll write this as A whole square, then put some gap, then we'll write it as 4B whole square, then minus 2 into A into 4B, and then we'll write 5C whole square. So this will be A minus 4B whole square minus 5C whole square. So A minus 4B minus 5C, or plus 5C rather, and A minus 4B minus 5C. Okay. So I hope this practice session, or rather live practice session with me, was beneficial for you. Okay, I always enjoy teaching. पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है. Okay, so let's see what topics we can cover in the next live stream. Today is already very late. It's already 10 minutes past 12. So I'm going to end my stream, and I would like to thank all of you for joining today's live stream. And you can still share the video once it is uploaded in my channel. You can subscribe to my channel, share it with your friends, share it as much as possible. Okay, like the videos, and thank you again for joining. Bye bye and good night. See you in the next live stream. अरे मसूद তুমি এতিয়াও আছা বঢ়িয়া বঢ়িয়া চেষ্টা চলাই আছো এনেকে আহি চাগে স্কুলৰ হেৰিবোৰ অলপ ৰিফ্ৰেছ হৈ গ'ল আৰু তোমাৰ ন ফেক্টৰাইজেশ্যন থেংক ইউ তুমি ইমান দেৰি যে থাকিলা আকৌ দেই সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ কথা মই তাকে ভাবিছোঁ ইমান দেৰি কোন আছে অথনিৰ পৰা এটা কনচিষ্টেণ্টলি এটা ভিউৱাৰ দেখাই আছে মানে মই ভাবিছোঁ কোন হয় ঠিক আছে দিয়া মাছুদ বৰ ভাল লাগিলে দেই বাই বাই গুড নাইট